Hello everyone. So today in the numerical methods subject we will see lecture number 3. In the last lecture we talked about the bisection method and its algorithm, and I explained that graphically as well. Today we will see an example on bisection method, and after that I will give you 4 to 5 examples on the same which you have to do at your home and make a PDF, and then I will tell you what you have to do with that. Okay, let us start. Okay, so this is a question. You can get the questions like that. Find the root of a non-linear equation x cube minus 4x minus 9 equal to 0 lies between 2.625 and 2.75. Find the root correct to 4 significant digits. Before we will start following the algorithm and solve this, I would tell you one thing which is important, I guess. Okay, see, what do you mean by a significant digit, and what do you mean by a decimal digit? Okay. See, for example, if I have a number 2.675824, जैसे कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है that you have to find the root correct to 4 significant digits. This is your digit starting from the first number. Okay, whenever you would talk about a significant digit, you have to omit the decimal here. Okay, so 4 significant digits means 2, 6, 7 and 5. ओके अगर मैं सेम नंबर को लूँ 5824 और मैं आपको बोलूँगी कि मुझे इसमें से भी आप 4 डेसिमल डिजिट तक आंसर दे दो, तो आपको इन 2 पॉइंट्स को स्किप करना है, यहाँ से 4 पॉइंट्स को लेना है, इंक्लूडिंग दिस, नो डाउट, ये 4 डेसिमल डिजिट्स तक. दैट मीन्स आपका जो सोल्यूशन है आपको यहाँ तक फाइंड आउट करना है. ओके, so this is what means by significant digit, including the first digit. Okay, then the 3 digits after the decimal point. But when you have to find the solution for up to the 4 decimal digits या like that, तो आपको पहला डिजिट तो इंक्लूडिंग होगा ही होगा, लेकिन डेसिमल डिजिट्स का मतलब कि डेसिमल के बाद भी आपको 4 डिजिट्स को लेना है. लाइकवाइज अगर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने हैं तो यहाँ तक, अगर 5 तो यहाँ तक, लाइक दैट. ठीक है, सो यू मस्ट ऑलरेडी नो दैट. ओके, तो बाइसेक्शन मेथड के जो एल्गोरिथम है हम उसको फॉलो करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. ठीक, विल स्टार्ट. से लेट एफ ऑफ एक्स बी द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9. ओके, 2 चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी दी गई हैं. हमें बाइसेक्शन मेथड को यूज़ करना है जहाँ पे आपको 2 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बोलता है कि रूट जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो लाई करता है बिटवीन 2.625 एंड 2.75 के बीच में. दैट मीन्स आर x1 इज इक्वल टू 2.625 एंड आर x2 इज इक्वल टू 2.75. ठीक, ये चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी दी गई होंगी. अगर आपको कल का ग्राफ याद होगा, हमें पता है कि आफ्टर नोइंग दीज 2 वैल्यूज़, द फर्स्ट थिंग इन द फर्स्ट आइट्रेशन, ओके, आइट्रेशन नंबर 1, आइट्रेशन फर्स्ट, पहली चीज़ जो हमें कैलकुलेट करनी है इज़ एफ ऑफ x1. दैट मीन्स हमें ये x1 इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है एंड वी हैव टू गेट द वैल्यू. से एफ ऑफ x1 का मतलब कि ये x1 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, जहाँ जहाँ पे भी x है उसको रिप्लेस करो. सो एक्स क्यूब के बदले क्या लिखना है यहाँ पे, x1 का वैल्यू क्यूब माइनस 4 इंटू 2.625 माइनस 9. ओके, इसको क्यूबिंग करके प्लस माइनस करके हमें यहाँ पे सिंपल प्लस माइनस करना है, ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है. तो इसका जो वैल्यू है ऑलरेडी कैलकुलेटेड है मेरे पास, तो मैं लिख देती हूँ, बट वेन एवर यू डू इट प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से इसको कैलकुलेट करें. द आंसर ऑफ दिस विल बी माइनस 14121. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक वैल्यू कैलकुलेट करना है. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक 1 और 2 डिजिट्स मोर. ठीक है, देन व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट एफ ऑफ x2 बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x2 इन द सेम इक्वेशन.
2.75 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2.75 माइनस 9. इसका जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट विल बी 0.7969. ओके. In the previous class, I told you we can only solve the question when the signs of these two, f of x1 and f of x2, का sign जब opposite में होगा. We calculated this, its sign is negative. We calculated this, its sign is positive. That means yes, we can find the root using the same. ठीक. तो उसके बाद next point क्या था, हमें हर एक iteration में we have to calculate x of 3 now. x of 3 calculate करने के लिए we know the formula x1 plus x2 divided by 2. x1 is 2.625 plus x2 is 2.75 divided by 2. इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा दैट इज 2.6875. ठीक. आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f of x3. दैट मीन्स ये जो हमें x3 का वैल्यू निकला इसको उठा के हमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू. दैट मीन्स 2.6875 का होल क्यूब माइनस 4 इंटू 2.6875 माइनस 9. इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आ जाता है दैट इज माइनस 0.3391. ठीक. ओके. देन आफ्टर कैलकुलेटिंग f of 3 हमें फर्स्ट चीज़ ये देखनी है क्या f of 3 up to the 4 significant digits, because we have to find it up to the 4 significant digits. अगर ये 4 significant digits तक 0000 आता है that means we have to stop over here and ये जो x3 है this is our root. okay? अगर यहाँ पे f of x3 का वैल्यू आ जाता माइनस 0.00003391, हमें आंसर कहाँ तक चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक. दैट मीन्स ये 4, राइट. अगर ये 0 के बराबर आता तो जो भी इस टाइम पे इस आइट्रेशन में x3 का वैल्यू है वही हमारा रूट का वैल्यू है. बट वी क्लियरली कैन से नो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो ये वैल्यू जो है ये हमारा रूट नहीं है. दिस इज़ नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन. उसके बाद क्या था, अब 3 चीज़ें लाई करती थी. एक चीज़ मैंने बता दी कि अगर इक्वल टू 0 होता. अब हमें क्या करना है, हमेशा f of x1 एंड f of x3 को कंपेयर करना है. अगर अब आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज़ अ नेगेटिव साइन, दिस इज़ अ नेगेटिव साइन, दैट मीन्स बोथ आर हैविंग द पॉजिटिव साइंस. ठीक. तो एल्गोरिथम के हिसाब से भी और ग्राफिकली भी मैंने कल आपको समझाया था. व्हेन f of x1 इंटू f of x3 का वैल्यू ऑब्वियसली माइनस माइनस है तो पॉजिटिव ही आएगा. तो उसका जो वैल्यू है दैट वुड बी ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स दोनों का जो साइन है, या एक तरीका ये भी है या दूसरा आप बोल सकते हो कि बोथ f of x1 एंड f of x3 दे आर हैविंग सेम साइंस. नेगेटिव साइन है दोनों का. सो व्हाट वी हैव टू रिप्लेस x1 by x3. और अगर आपको ईदर वे में समझ में आता है यू कैन से रिप्लेस x3 by x1. अब जो हमारा x3 है वही नई आइट्रेशन में हमारा x1 बनेगा. ठीक है, नोटेड. ठीक, यहाँ तक समझ में आया. ओके. सो वी कैन राइट देयरफॉर आर न्यू सर्च इंटरवल विल बी. अब हमारा जो नया सर्च इंटरवल है जब हम x3 को x1 से रिप्लेस करेंगे दैट मीन्स हमारा जो x1 है, ठीक है, वो अब 2.625 नहीं, सेकेंड आइट्रेशन में वो क्या बनेगा 2.68275 विल बी 2.6875. और हमारा जो x2 है वो वही रहेगा जो ऑलरेडी हमारे पास है 2.75. सो 2.75. okay, so this way we can come closer to the root. Second iteration. So for second iteration our x1 is equal to 2.6875 and our x2 is equal to 2.75. So again we have to calculate the value of x1 by substituting this
in the equation, that means 2.6875 का whole cube minus 4 into 2.6875 minus 9. इसका वैल्यू ऑलरेडी हमने प्रीवियस कैलकुलेशन में निकाला ही था, जो कि f of x3 था इन द प्रीवियस, दैट इज g minus 0.3391. अगेन f of x2 is 2.75 का होल क्यूब माइनस 4 into 2.75 minus 9 is 0.7969. opposite signs हैं, that means we can calculate the value of x3 by x1 plus x2 divided by 2 equal to 2.7187. calculate the value of x3 by substituting this value in the equation. So 2.7187 का whole cube minus 4 into 2.7187 minus 9 is equal to 0.2200. So therefore we can write f of x1 and f of x3 का जो value है that will be less than 0. So in this, at this point of time, क्योंकि opposite signs आएंगे, so replace x3 by x2 या x2 by x3, ठीक है, this way. So therefore our new, I will do it quickly now. I hope you understood what we have to do. So our new search interval will be x1 will remain as it is क्योंकि हमने replace x2 को किया है. Now x2 will be this value 2.7187. So iteration number third. For this x1 will be 2.6875 and x2 will be 2.7187. So calculate f of x1. मैं directly result लिख देती हूँ, but you know that you have to take this in the equation जो हमारे पास already है. तो f of x1 का value calculate करने से we get this value, and f of x2 का value calculate करने से we get this value. Both are of opposite sign, so we can calculate x3. x3 का value आएगा 2.7031. Then you have to calculate the value of x3, whose value will be 0.0615. Now both are negative, so we have to replace x1 by x3. So therefore f of x1 and f of x3 is greater than 0, or they are having the same signs. So replace x1 by x3. Okay, so the new search interval for the fourth iteration. So therefore our new search interval will be 2.7031 comma दूसरे में कोई चेंज नहीं आएगा, that would remain as it is x2. Okay. Now the fourth iteration, we know x1 is equal to 2.7031 and x2 is equal to 2.7187. So after calculating x1, we are going to get is minus 0.0615, and for x2 we are going to get 0.2200. Then calculate x3 and उसका value जो है that will become 2.7109. Then calculate the value of f of x3 is equal to 0.0787. Again both are of the opposite values, that means f of x1 and f of x3 will be less than 0 obviously. So replace x2 by x3. So therefore for the next iteration our new search interval will be x2. Okay, so x1 would remain as it is and x2 will be 2.7109. Okay. Then the fifth iteration, so x1 is
2.7031 and x2 is 2.7109. So again calculate f of x1, which will be minus 0.0615. Calculate f of x2, that is 0.0787. Then calculate x3, that is 2.7070. Obviously then calculate f of x3 equal to 0.0085. Therefore f of x1 and f of x3 is less than 0. So replace x2 by x3. अब आप बोल रहे हो कि मैम आप तो इतनी आइट्रेशंस कर रहे हो, हमें कहाँ पे स्टॉप करना है? हमें स्टॉप तब करना है जब हमारे अप टू द 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, हमें देखना है कि क्या इस आइट्रेशन में, आइट्रेशन नंबर 4 में x3 का वैल्यू क्या है 2.7109, x4 में आया 2.7070। अगर हमारे कुछ आइट्रेशंस में ये x3 का वैल्यू अप टू द 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक सेम आएगा, दैट मीन्स x3 के वैल्यू में कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं हो रही है, देयर वी हैव टू स्टॉप, दैट वुड बी आवर आंसर. ओके, नाउ सी, सो देयरफॉर आवर न्यू सर्च इंटरवल विल बी, x2 को रिप्लेस करना है तो x1 वुड रिमेन एज इट इज 2 and x2 will be 2.7070. We are converging our root, which is most important. So fifth iteration is done. I will show you one example as a whole. तो क्लास में तो है नहीं कि आप खुद से करें, and I will check. 3.1 and x2 will be 2.7070. ठीक है, calculate f of x1, that is minus 615. f of x2 will be 0.0085. x3 will be 2.7050 and f of x3 will be minus 0.0274. So therefore f of x1 and f of x3 are greater than 0. So we have to replace this time x1 by x3. So we can say our new search interval will be 2.7050, 2.7070. Okay, now the seventh iteration, our x1 will be equal to 2.7050, x2 is equal to 2.7070. अगर हम अभी तक देखें, हमारी फोर्थ आइट्रेशन में पहले दो सिग्निफिकेंट डिजिट सेम आ रहे हैं, दो ही आ रहे हैं सेम, ना कि तीन. लेकिन जब हम सिक्स्थ आइट्रेशन में देख रहे हैं, हमारे तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स फ्रॉम द सिक्स्थ आइट्रेशन एंड फ्रॉम द फिफ्थ आइट्रेशन, दे आर कमिंग क्लोज, बट अभी तक फोर्थ आइट्रेशन हमें सेम नहीं आ रही है. सो वी हैव टू कंटिन्यू. So f of x1 will be equal to minus 0.0274. f of x2 is equal to 0.0085. x3 will be equal to 2.7060 and f of x3 is equal to minus 0.0095. So therefore both are negative. That means f of x1 and f of x3 are having a value greater than 0. Obviously it will multiple that, so we have to replace x1 by x3. So therefore our new search interval will be x1 को रिप्लेस करना है, so 2.7060 and 2.7070 would remain as it is. Now abhi tak bhi in the sixth iteration up to 3 digits we are getting the same, but we have to do it up to the 4 significant digits. Iteration number 8.
So x1 is 2.7060, x2 is 2.7070, f of x1 is equal to minus 0.0095, f of x2 is equal to 0.0085. Okay, then x3 will be equal to 2.7065. f of x3 will be minus 0.0050. So f of x1 and f of x3 is greater than 0, so replace x1 by x3. अगर आप इस ग्रेटर देन से परेशान होते हैं तो आपको देखना है कि अगर साइंस सेम है तो हमें x1 को रिप्लेस करना है, अगर साइंस ऑपोजिट है देन वी रिप्लेस x2. So it's new search interval will be, what will be the new search interval? x1 को रिप्लेस करना है, so 2.7065 and x2 would remain as it is. Now you can see in our iteration number 7 we are getting 2.706, 4 significant digits. In iteration number 8 we are getting 2.706. Now we will see the last iteration. अगर 9th iteration में भी हमारा यही result आया then we will stop. So x1 is equal to 2.7065 and x2 is equal to 2.7070. f of x1 will be minus 0.0050, f of x2 will be equal to 0.0085, x3 is equal to 2.7067. Yes, in the iteration number 7, in the iteration number 8 and in the iteration number 9 we get the same result up to the 4 significant digits. There is no change produced till then, and after that f of x3 will be 0.0031. So we can write, therefore in the iteration 7, 8, 9 the value of x3 remains same up to the 4 significant figures or digits. Therefore the root of the equation, what was the equation? X cube minus 4x minus 9, okay, is equal to 2.706. Hope you understood it. Thank you so much, and I will give you few examples which you have to do at your home. Please make the PDF of that. Do one thing, आप एक notebook बना लीजिए, उसी पे सब examples लिख लीजिए. अगर आप PDF नहीं भी बनाएंगे but after completing the whole unit आप उस पूरे unit का एक PDF बना के मुझे send करेंगे, that will be more than enough. Thank you.